First of all, you can introduce yourself or your clinic. मैं डॉक्टर संदीप धवन हूँ। मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की 1996 में, और उसके बाद मैं पीजीआई चंडीगढ़ में फैकल्टी रहा अप टू ईयर 2000। और पिछले 22 साल से मैंने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है, धवन जीवनदीप लिवर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड एंडोस्कोपी सेंटर, जो कि सेक्टर 16 चंडीगढ़ में स्थित है। हमारे पास यहाँ पे लिवर के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्योंकि सिवाय पीजीआई के आसपास कोई भी टर्शियरी केयर सेंटर नहीं है। तो चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर से सारे लिवर के पेशेंट्स आते हैं, जो काफ़ी एडवांस स्टेज में होते हैं, और उनको कई पेशेंट्स को लिवर के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ उनकी लाइफ की क्वालिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और वो महीने में ही 2-3 बार एडमिट होना पड़ता है। परंतु अगर उनका लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए तो एक बारी में उनकी बीमारी से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो क्योंकि हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने डॉक्टर रेला से रिक्वेस्ट की कि उनकी टीम में से वो किसी को भेजें, ताकि हम अपने पेशेंट्स को ये सुविधा प्राप्त करा सकें। तो ही वॉज वेरी काइंड एंड ही हैज़ सेंट डॉक्टर गोमती टू अस, हु विजिट्स वंस ए मंथ। सो एवरी फर्स्ट मंडे वो हमारे पास आते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जो हमारे लिवर के पेशेंट्स हैं उनको उनकी एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है, और फिर पेशेंट वहाँ पे ट्रांसप्लांट करा के फिर वापस हमारे पास आ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को ट्रस्ट बना रहता है कि वो हमारे ही पेशेंट है। तो मैं डॉक्टर गोमती से कहूँगा कि वो आगे हमें लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर गोमती। Liver transplant is a very unique surgery. It is different from any other surgery. It's not like a hernia or an appendix surgery, because it involves a lot of management medically before and after surgery. So with Dr. Dhawan's expertise in gastroenterology, when the patients need a liver transplant, they come to us. We then assess them for a transplantation, because one is needing a transplant, another whether they are fit for a transplant. So we assess the fitness for transplantation for the patients and then proceed with transplant. Now how can we do transplants? In two ways. We need a donor liver to donate for the patient. So one is either they wait on the waiting list. When patients who have an accident and are brain dead, family will donate the organs, and the patient who is on the waiting list will get the liver. Second option is when a family member can donate half of their liver to the patient. So depending on the patient's condition, if they are reasonably stable, they will wait on the waiting list. When their turn comes, we do a transplant. But some patients are very sick even when they come for a transplant. They cannot wait for months together for a transplant. In that situation, the best option is for a family member to donate half of their liver. So we do a surgery on the donor, take part of the liver, place it into the patient who needs the liver. Usually the hospital stay for the donor is about 5 to 6 days. For the patient is about 10 to 12 days. After that they get discharged. We expect them to stay in Chennai for about 4 weeks from the day of surgery. That is 2 weeks at least after discharge. By the time the liver function gets normal, patient gets walking, gets back all the strength, end of 4 weeks when they are stable, they come back to their hometown. At the stage of transplantation, how manage a healthy liver to transplant? How manage that? How? Sorry? आप वो कैडावर ट्रांसप्लांट, लेकिन कैडावर ट्रांसप्लांट को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है उसकी। तो 6 months होगा, 1 year होगा वेटिंग टाइम में। बट लिवर का पेशेंट बहुत सिक है तो वेट नहीं कर सकते, तो फैमिली मेम्बर देना पड़ेगा। तो ट्रांसप्लांट के बाद दे कम बैक टू द होम टाउन. लाइफ लॉन्ग फॉलो अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसप्लांट. सो at Dr. Dhawan's clinic, they will do the regular follow-up. I come here every month and I will also see them and do the necessary changes for medications and whatever is required. धवन साहब, फैसिलिटीज़ की अगर बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज़ आपके जो क्लिनिक की थोड़ा एक्सप्लेन करें थोड़ा।
यहाँ पे हमें कोई खास फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं जब ऑपरेशन हो जाता है। तो उनके रूटीन में हमें ब्लड टेस्ट करने होते हैं, अल्ट्रासाउंड करना होता है, फाइब्रो स्कैन करना होता है, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। अगर पेशेंट को कोई ख़ास टेस्ट की ज़रूरत है या उसको इमरजेंसी की ज़रूरत है, वो हम यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं, वरना हम उनको फिर वापस चेन्नई भेजना पड़ता है। वो परसेंटेज बहुत कम रहती है। जी अपना नाम बता दीजिए पहले। My name is Gursimrat Singh Garewal. जी तो ये जो ट्रांसप्लांट का करवाया आपने, On 20th of October 2020, I was diagnosed for HCC, that is hepatocellulocarcinoma, cancer of the liver, in July of 2019. I tried everywhere. PGI has limited availability of, speaking and a patient, a friend of mine who was a patient, transplant patient at the Rella Institute, told me to go to the Rella Institute in Chennai. I went there and met Dr. Jyothimani and Professor Rella, and I felt extremely confident and infused so much confidence into me that I forgot about every other place, and I went there. And the hospital is fully equipped to look after you. They go out of the way to make a patient feel comfortable. I stayed 11 months in Chennai because COVID came and my surgery couldn't be performed. But they did look after me so well that I did not. how feel after the transplantation? I had my transplant on 20th of October, and after that I am perfectly normal. I play golf, I travel a lot, and I've just been to Australia and back. There's no problem at all. I'm maybe feeling fitter than what I was 5 years back. Any type of side effect after the transplantation? No, nothing at all. 4 to 5 patients people talk to me about my this thing and send them.